बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। विकालभोजन वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नच्चगीतवादित विशुक्कदर्शन माला गंधविलेपन धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादित विशुकदर्शना माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। उच्च शयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चशयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरणेन सद्धिं अट्टांग उपोषथ शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा यप्पमादेन शीलसम्पादेथ। मां बन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इसके पश्चात जो पंचशील लेना चाहते हैं वे मेरे साथ याचना करेंगे। ओकाश पंचशील लेने वाले उपासक उपासिकाएं हाथ ऊपर करेंगे, स्टैंड करेंगे। जो अष्टशील लिए हैं वो अभी उनका हो चुका है। पंचशील जो उपासक लिए हैं उनका उनके द्वारा जो है अभी पंचशील लिया जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे ओकास अहं भंते, ओकास अम भंते, तीसरणेन त्रिशरणेन सह
तमाम पंचशीलं पंचशीलम धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुगमस्स शीलं देथ मे भन्ते शीले मन्ते द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते ओकास अम्बन्ते तीसरणेन त्रिशरणं सह सह पंचशीलं पंचशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहतत्त्व शीलं शीलं देथ मे भन्ते एतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आम भन्ते कहें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेस्य दुश्चचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरायमदानसारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तीसरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा यप्पमादेन शीलसम्पादेथ
आम भन्ते आवन्ते साधु 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 बुद्धं साधु नमामि साधु मम नमानि धम्मं नमामि धम्मं नमानि संघं नमामि। संघं नमानि। अभी हमने अष्टशील और पंचशील ग्रहण कर लिया है। अब इसके पश्चात हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना में प्रवेश करेंगे। जितने भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं शामिल हो चुके हैं वे सभी बुद्ध का जो प्रतिमा रखी हुई है, आप अपना सामने में बुद्ध की एक प्रतिमा रखें और उसके पश्चात सर्वप्रथम दीप दिया आप मोमबत्ती जला सकते हैं और उसके पश्चात पुष्प अर्पित कर सकते हैं। त्रिवार वंदन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं। उप्फं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं। गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं। सब्बपापविशुद्धस्य अनन्तगुणधारिणो नमामि लोकनाथस्य धूपेनेतेन सादरं। सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतान्। देशे त्वापवरं धम्मं पापमागन्धनाशकान् सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि लोकनायकं। घनसारप्रदीप्तेन दीपेन तमदनसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। ब्रह्मिन्द्रदेवेन्द्र नरेन्द्र राजा बोधिसुबोधि करुणागुणगं। मय्यापदीपजलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। बुद्धधम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातु गभ्भे। लङ्काय जम्बुदीपेति दस्य पुरवरे नागलोके च तूपे। सभ्ये बुद्धस्य बिम्बे सकलदश दिशे केशलोमादिधातु वन्दे। सभ्येऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं। शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयङ्का। पत्तो सबयुक्तं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता। अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो। पुरीशधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि।
ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धायनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धाहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितदोषो बुद्धो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं बुद्धसमं नत्ति तस्मात् सुत्ति भवन्तु ते यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेन महती विजित्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं नमामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको ये हि पस्सिकोपनायिको पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च ये धम्माहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो खलितदोषो धम्मो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं धम्मसमं नत्थि तस्मात् सुत्ति भवन्तु ते अट्टाङ्गिको अर्यपथो जनानं मोक्षप्रवेशाउजगो यमग्गो धम्मो अयं सन्तिकरो पणितो नियानिको तं परमा धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसंघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्चुपन्ना च ये संघाहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं चातिविदुत्तमं संघे यो खलितदोषो संघो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं संघसमं नत्थि तस्मात् सुत्ति भवन्तु ते संघो विशुद्धो वरदक्षिणयो सन्तीन्द्रियो सबमलपहिनो गुणेहिनेके हि समिद्धिपत्तो अनासवो तं पडमामि संघं नमामि नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च नमामि पच्चेकबुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहं च
इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या संघं पूजेमि अद्दैमाय पटिपत्त्या जाति जरा मरणं मा परिमुञ्चस्सामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्त्या देवो वස්සतु कालेन सस्सम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। साधु साधु साधु। इसके पश्चात हम करणीय मेत्ता सूत्र लेंगे। करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शन्तं पदं अभिशमिच्च सक्को जुचसु वचोचस्स मुदुअनतिमानि सन्तुष्को च सुबरो च अपकिञ्चो च सल्लवकवुत्ति सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगब्भो कुलेषु अनुनुगिद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चेयेन वियुं परे उपवदयुं सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपाणभूतत्थितसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमा रस्यकायणुकतुला दिट्ठा वा ये वादिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेशी वा सभ्ये सत्था भवन्तु सुखितत्ता ना परो परं निकुब्येत नातिमय्यत् कत्तचिनं किञ्चे व्यारोसना पटिगसंयानय्यमय्यस्स दुःखमिच्छय्य माता यथा नियं पुत्तं आयुषा एकपुत्तं अनुरक्खे एवंपि सब्बभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मित्तं च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उद्धं अधो च तिर्यं च असंबाधं वीरं सपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अदिष्ठय्य ब्रह्ममित्तं विहारं इदमाहो दिष्ठिं च नुपगमाशीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्य गेदं नहि जातु गब्बसंयं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं एतेन सच्चवज्जेन सब्ब दुःख सब्ब रोग सब्ब भय विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन पातु त्वं रत्नत्रयं। महामंगल सूक्तम्। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अयतरा देवता अविकन्ताय रत्या अविकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं ओवासित्वा येन भगवातेनुपसङ्गमे उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं गच्छासि एकमन्तं चिताकोश देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयुं आकङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्
पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहु सच्चञ्च सिपञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु पट्टानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुलाचकं मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति वीरति पापामज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गार्भो च निवातो च सन्तुष्टे च कतयुता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचस्सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्च एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च अर्यसच्चान दर्शनं निब्बान सच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादिशानि कत्वान सब्बत्तमपराजिता सब्बत्तसुत्थिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जय मङ्गलम् एतेन सच्चवज्रेन सब्बदुःख सब्बरोग सब्बभय विनाशतो एतेन सच्चवज्रेन पातु त्वं रत्नत्रयम् रत्न सुक्तं यानि दभूतानि समागतानि भुम्मानि वा यानि वयन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु आथोऽपि सक्कञ्च सुनन्तु भासितं तस्मै भूतानि समेत सब्बे मेत्तं करोथ मनुष्यापजाय दिवाचरत्तो चरन्ति ये बलिं तस्माहि नेरक्षत्थ अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदबाहुरं वा सज्ञे सुवायं रतनं पणितं ननो समङ्गति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खय्यं विरागं अमतं पणितं यदज्जगा शक्यमुनिशमाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चि इदम्पि धम्मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसेठो परिवण्यं शुचिं समाधिमानन्तरिकय्यमाहु समाधिना तेन समो न विद्यते इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गलाट्ठ सत्तं पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि हुन्ते ते दक्षिणय्या सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महफलानि इदम्पि संगिरतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुप्रयुक्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतमशासनं मे ते पत्तिपत्तामतं विगह्य लद्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संगिरतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यतिन्दखिलोपटविंसितोऽसिया चतुर्भिः वा तेभिः असकम्पकम्पियो तथोपमं सपुरिसं वदामि यो वर्यसच्चानि अविच्च पश्यति इदम्पि संगे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हुन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवङ्गट्ठमयाधियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सहावत्सदर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकिञ्चितं च सिलब्बतं वापि यदत्थि किञ्चि चतुःपाये च विप्पमुत्तो चचाभिठानानि अबभ्भकातुम् इदम्पि संगे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा
अभब्बोसो तस्य पटिच्छदाय अभब्बतादिष्टपदस्य बुत्ता इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वनप्पगुम्भे यत फुस्सितज्ञे गिम्हानमासि पटमस्मि गिम्मे तथोपमं धम्मवरङ्गदेशयि निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धेरतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वरो वरयो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशयि इदम्पि बुद्धेरतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो